आपके इस प्यारे से शो का नाम है राजमंत्र और मैं हूं आपका प्रिय मित्र पॉलिटिक्स कोच अमरीश राय। हम बात करते हैं कि कैसे बिना अधिक पैसे खर्च किए, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के भी पॉलिटिक्स को एथिक्स के साथ आप जीत सकते हैं, पॉलिटिक्स में सफल हो सकते हैं। आज आपके लिए एक ऐसे मेहमान आ रहे हैं जो अपने जीवन के 23 वर्ष तक भारतीय वायुसेना में अधिकारी रहे। भारतवर्ष के एक बेहतरीन लीडरशिप कोच हैं। ये युवाओं के लिए एक सिस्टम पर काम करते हैं। इनका एक विशेष फॉर्मूला है, पर्पस, ड्रीम, स्ट्रैटेजी, शेड्यूल, पास, PASS। पर्पस आपके अर्थात युवाओं के पर्पस को क्रिएट करते हैं और उनको शेड्यूल तक, उनको काम तक पहुंचाते हैं। ये भारतवर्ष के युवाओं को लीडर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इनका नाम है ग्रुप कैप्टन संदीप सरकार। ग्रुप कैप्टन संदीप इंग्लैंड की एक जानी मानी संस्था अल्फा ग्रुप इंटरनेशनल, जो कि 23 देशों में काम करती है, के रीजनल डायरेक्टर। तो मिलते हैं संदीप सरकार से। स्वागत है संदीप जी। नमस्कार। तो संदीप जी, इनफैक्ट जब मैंने आपके बारे में पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो ऐसा समझ में आया कि आपके पास एक तरह से पोटली है, पूरी विजडम की पोटली है। अगर सबको एक साथ समेट लिया जाए, आपके लगभग 37-38 वर्षों तक आपने 35 वर्षों तक लगभग आपने अपने जीवन के दिए हैं समाज को, सिस्टम को, प्रोफेशनल तरीके से दिए हैं, देश को दिए हैं। वास्तव में यदि आपके जीवन पर एक मूवी बनानी हो तो कहां से शुरू होकर कहां समाप्त हो सकती? देखिए, ये विश्वास है मेरा कि जिंदगी सबसे अच्छा और बेहतरीन टीचर है हमारा। जो वो सिखाते हैं वो यूनिक है और वो पावरफुल है और आपके जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर ये शुरू से देखा जाए तो लाइफ शुरू हुआ था एज ए सोल्जर और उसके बाद 2-3 ट्रांजिशन हो चुका है। शायद ये पर्पस का असली मतलब है। एज यू प्रोग्रेस इन लाइफ यू कीप सीइंग लाइट्स इन फ्रंट और वो आपको मार्गदर्शन कराता है। एक टाइम में लगा कि जिंदगी मैप की तरह होना चाहिए फौज में, और उसके बाद कॉर्पोरेट लाइफ में जब घुसा, देखा कि आपके सामने जो भी माइलस्टोन्स है ना, वो दिखना चाहिए। वो बोल्ड फॉन्ट 38 में लिखा हुआ होना चाहिए। तब जाके जिंदगी का कुछ मतलब निकलता है और वो सक्सेसफुल भी होता है। और शायद ये सबसे बड़ा अंडरस्टैंडिंग है अभी कि ये मैप नहीं चल सकता है लाइफ में। आपको चाहिए कंपास जो आपको देगा डायरेक्शन। आपका अंडरस्टैंडिंग साफ होगा, वो ले जाएगा आपको पर्पस की तरफ, और उस तरफ चलता हुआ आपको हर मोड़ पे you will get a larger picture. There you will have a alignment, you will have a realignment, you will have your creativity, you will have your values, your beliefs that will guide you, your principle will guide you, but final direction will be purpose that will take you to your true north. So ये आज के दिन का सबसे बड़ा अनुभव है जो आपको एक प्रेशर कुकर से बाहर लेके आता है। आपने जो अभी बताया उसमें दो शब्द मुझे कैच करने का मन कर रहा है। पहला पर्पस और दूसरा प्रिंसिपल। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि पर्पस आपके पास होना चाहिए, आपके पास कारण होना चाहिए आपके जीवन का, कि वास्तव में आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, पहला। दूसरा, आपका प्रिंसिपल आधार बनेगा आपके कारण तक पहुंचने के। यस। ऑलराइट, सो इसको पॉलिटिक्स में, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं वही बोल रहा, आप पूछिए। यदि यही बात पर्पस, प्रिंसिपल और पॉलिटिक्स, तीन चीजों को मिलाया जाए तो एथिक्स के साथ
पॉलिटिक्स को कैसे एक सही 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 रूप में जिया जा सकता है। देखिए, मोटा मोटा एथिक्स हम क्या समझते हैं? जो काम काज अंडरस्टैंडिंग गाइडेड होता है बाय एथिकल वैल्यूज, बाय एथिकल प्रिंसिपल, वो एक सेट ऑफ प्रैक्टिस या बिलीफ है जो प्रमोट करता है फेयरनेस, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। पब्लिक लाइफ में हो सकता है, प्राइवेट लाइफ में हो सकता है, गवर्नेंस में हो सकता है, कहीं पे भी। उसमें कुछ बड़े पिलर्स दिखते हैं मुझे, जैसे इंटीग्रिटी, जैसे फेयरनेस, जैसे ट्रांसपेरेंसी, जैसे अकाउंटेबिलिटी, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, टॉलरेंस। ये काफी मायना रखता है सही तरह मार्ग दिखाने में इन पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? मोटा मोटा अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता है, वो एक अप्रोच होता है पॉलिटिक्स। और वो गवर्नेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेस, formulation and implementation of policies, the framework, and resolution of conflict and dispute. So ये जो कुछ चीज मैंने बताया, इनके साथ अगर आप आपका बेसिक्स या फंडामेंटल्स को जोड़ोगे, that will become powerful, profound, acceptable to many, and would lead to transformation of the society, lifting people to the next level. Everything will come from within. और इसके साथ अगर जब आप प्रिंसिपल को जोड़ने जाओगे, देखिए प्रिंसिपल्स की जब बात करते हैं ना, उनके साथ एक और चीज आता है, उसको हम कहते हैं रूल। ये रूल और प्रिंसिपल का जो लड़ाई है, ये सदी पुराना है। हमारे एपिक में भी इसका रेफरेंस है। प्रिंसिपल इज ऑल फॉर अदर्स। प्रिंसिपल मतलब धर्मा, और रूल इज अ फ्रेमवर्क which is created for governance, that is all outward mostly. So principle is all about fundamental, ethics is a framework, and your political will is the ability to do governance and do structureize your society, run them well. So they are well stitched, they are fundamentally stitched. Anything that is followed by nature is fundamental, absolutely fundamental. That's right. आप देखिए, वो भी आपका नेचुरल प्रोसेस में ये सब आपको मिलेगा। वहाँ डाइवर्सिटी है, इंक्लूजन है, वहाँ टॉलरेंस है, वहाँ स्पेस फॉर अदर्स है, सब कुछ है। सिर्फ कट पेस्ट में प्रॉब्लम है। कोई भी चीज को जब उठाते हैं, हमारा आदत पड़ गया वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला। करिए, उसमें सिर्फ 3 चीज ऐड कर लीजिए, जिंदगी बदल जाएगा। एंड वो क्या है? स्पेस, टाइम और कॉन्टेक्स्ट। तो जो आप पिकअप करते हैं, उसको आप ये तीनों का फिल्टर के थ्रू ले जाइए, ताकि वो रेलिवेंट हो। चाहे आपका नॉलेज है, चाहे आपका डेटा है, चाहे आपका एप्लीकेशन है, कोई भी। ये अगर हम करें भी तो सामान्य रूप से मुझे देखने में आ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ये सारी चीजों को फॉलो करे और फिर वो पॉलिटिक्स में आए, एक पहला। दूसरा, कोई इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करता है और वो पॉलिटिक्स में आता है, दोनों पॉलिटिक्स में आए, तो दोनों में से जो फॉलो नहीं करता है वो, मान लीजिए पॉलिटिक्स जीत जाता है, पॉलिटिक्स में सफल हो जाता है, और जो ये फॉलो कर रहा है वो पॉलिटिक्स में सफल नहीं होता है। तो पॉलिटिक्स में सफलता सामान्य रूप से ऐसा देखा जा रहा है, सामान्य रूप से ऐसा देखा जा रहा है। अभी आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में सफल होने के लिए इन एथिक्स का प्रैक्टिकली कैसा प्रयोग करें? देखिए, इसमें 2-3 चीज पहले साफ कर लेना जरूरी है। वो ये है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिक्स में जो आते हैं वो सोसाइटी से आते हैं, सो दे आर स्लाइस ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो समाज में है
उसी का ही झलक पॉलिटिक्स में दिखता है। राइट। पॉलिटिक्स कोई ऐसे सेक्लूडेड चेम्बर नहीं है कि वहां कुछ और होगा, सोसाइटी में कुछ और होगा, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है कोई जगह में, तो वहां नाटक चल रहा है, एक्टिंग। सर, किसी के हाथ में या पैर में स्विच तो नहीं है ना। आप इसको ऊपर कर दिए, एथिकल हो गए, नीचे कर दिए, अनएथिकल हो गए। अभी घर में हूँ, एवरीथिंग शुड बी ऑल राइट, ट्रीटमेंट टू द फैमिली, ट्रीटमेंट टू सन डॉटर पेरेंट्स, एब्सोल्युटली गॉट टू बी स्पीक एंड स्पैन, टिकी टिबू, एवरीथिंग शुड बी ऑल राइट। एंड देन व्हेन यू गो आउट, देयर आर पीपल, देन यू स्टार्ट एक्टिंग, यू डू दिस, यू डू दैट। सर, ये चलता नहीं है। बहुत तकलीफदायक है ये। इट डजंट वर्क इन द लॉन्ग रन। 2-4 दिन चल सकता है, ज्यादातर नहीं चलता है। लोग समझदार है इन जनरल। वो समझना नहीं चाहते, वो बात अलग है, वो समझदार है। सबको समझ में आता है सब कुछ। ऑलराइट, सो ऑलराइट। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि पॉलिटिक्स इज अ स्लाइस ऑफ योर सोसाइटी। नाउ कमिंग टू somebody who is ethical or principled and somebody who is not, and then reflection. So if I have said politics is like society, a reflection of society, घर में 5 मेंबरों में से अगर एक थोड़ा सा अनएथिकल है, न्याय नीति फॉलो करता है, नहीं करता है, तो घर में जो होता है, राजनीति में भी वही होता है। और उसका फल पूरा परिवार को भुगतना पड़ता है। यहाँ राजनीति वाला फल देश को भुगतना पड़ता है। राइट। तो सर, फंडामेंटली मामला बड़ा सिंपल है, दैट आपका जो अप्रोच है, वो अप्रोच का एक परिभाषा होनी चाहिए। और वो परिभाषा के बीच में आप जितनी इंप्योरिटीज लेके आएंगे, वो आपका सिस्टम को उतना पॉल्यूट करेगा। चाहे समाज में है, चाहे ऑफिस में है, चाहे दोस्तों के बीच में है, चाहे रिलेशन में है, चाहे कंट्री में है। हाँ, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है। कोई सिस्टम में ज्यादा टॉलरेंस है थोड़ा सा, किसी में थोड़ा कम टॉलरेंस है। इतना अंतर है। ऑलराइट। करना चाहूंगा वो ये है कि ये जो रूल और प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, उसमें हमें एक तरफ दिखता है एम्पैथी, एक तरफ दिखता है एक्सप्लॉयटेशन, और वो एक जर्नी है। इंटरेस्टिंगली, ये दोनों सेम स्पेस से आते हैं। ह्यूमन एबिलिटी टू बी टू इमेजिन एंड बी क्रिएटिव। धर्म और अधर्म के बीच में चॉइसेस है और कंसिक्वेंसेस है। अब ये जो डिलेमा दिखता है हमें, किधर जाए, क्या करे, कौन सा चीज को फॉलो करे, इट इज ऑल अबाउट डिसीजन, इट इज ऑल अबाउट चॉइस। व्हाट डू आई डिसाइड, हाउ डू आई डिसाइड, इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड आई हैव ए understanding about this rule and principle which I feel is very closer to me. It says, I mean, it tells me that principle is all about fundamental, it is all about inward. कोई चीज जब फॉर्म होता है ना, चाहे स्टार्टअप कंपनी हो, नया कंपनी हो, उसमें सब इट इज ऑल फॉर अदर्स। थॉट बहुत बड़ा बड़ा होता है, हम बहुत कुछ कर लेंगे। सिमिलरली, in new setup, maybe new party, maybe new people, new fraternity, whatever new, everything is good, all are for others, it is for all for betterment. As a system becomes matured, the fundamental pillar on which the entire setup is standing, called people, starts getting eroded. ऑफिस में कौन आदमी क्या काम करता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है वो कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, करेक्ट। कितना बार ब्रेक लेता है। ह्यूमन बीइंग ट्रांसलेट्स टुवर्ड्स मशीन। Accountability is number of hours. Slowly people are forgotten. Rule become important. Operation successful, patients died because your principles are forgotten. It's all about rule. All right, all right, all right. So, can you pick up some positive example or examples where politics and ethics both are followed
rightly, successfully? You see, places where politics and ethics can be followed rightly or followed rightly are places where you create structure for fundamental requirement of human being, fundamental requirement of your mass, that you do promote your integrity, encourage your accountability, you work for your social justice and responsibility, Mhm. you encourage critical thinking, you embrace technology, you promote inclusion and diversity, and above all, you treat human being as human being and not as commodity. And ये सब करने के लिए जो फ्रेमवर्क चाहिए वो पॉलिटिकल सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि एजुकेशन। हम्म, आपका जो युवा पीढ़ी है वो देश के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए जो उनको समय चाहिए, जितना टाइम में वो कर सकता है, एक मिनिमम टाइम तो चाहिए। हम्म, तो शुरुआत में उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है। एवरीबॉडी इन्वेस्ट्स ऑन द यूथ, द यंग लैड, हम्म, यंग बॉय, हम्म, and his understanding, his psychology, his mindset, his values, his principles, his beliefs, all these fundamental things that we talked about starts getting developed then. Where does it start from? That is why I said no, it is related to your slice of the society. It has to start from home. And we say charity begins at home. Home can be in larger perspective. Home can be your home. Home can be your area where you grow. Home can be your larger family. Home can be your country also. हम्म, So in that context, everything has to start from there. Right education, right education and right to education. I think both are equally important. So give them the proper understanding and knowledge. Promote your basic culture there. Make them good human being. Contribute to that. Who will do that? That is why again I say, it relates to society. Parents are involved, they have a contribution here. Teachers are involved, they have a contribution here. The political system is involved because they create the framework. Nobody is excluded from the chain. Everybody has to have their own role to play. It is like an orchestra where a small instrument, you can say maybe saxophone, you can say maybe flute, हम्म, plays off tune, spoils the orchestra then and there, and people know about it. So when it plays in tandem, nobody will realize, ये ब्यूटी है सिस्टम की। जब काम करता है किसी को पता नहीं चलता है, लोगों को लगता है ऐसे ही हो रहा है। right. ये कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके जहन में आ रहा है जो रियल एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स और एथिक्स को एक साथ इम्प्लीमेंट किया गया हो? देखिए, एग्जाम्पल मतलब जितने भी कहें आप, रिवॉल्यूशंस हुआ है, चाहे वो हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, चाहे कंट्री को डिजिटाइजेशन की तरफ ले जाने का प्रयास हो, चाहे हमारा देश को आगे रखने का या सही जगह में रखने का जो चेष्टा है, फॉरेन पॉलिसी which is going to which puts India into right perspective in front of the world. You get your due position, that you decide what is right and wrong for you, not somebody else dictates from somewhere outside saying what is suitable for you. These all takes time, but मैं कहता हूँ कि ये सब में I mean, I do not want to talk about any one political party because मुझे नहीं लगता है कि ये एक दिन का रिजल्ट है। No, we are not talking political party. Only Yes, political event if something which is yes, followed with yes. ethics. So I am saying that ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो देश को आगे रखने का या फॉरेन पॉलिसी की, ये भी बहुत सालों का एफर्ट है, बहुत सालों का एफर्ट है, धीरे धीरे बना है, एक दिन में नहीं बना। हमारा क्या समस्या रहता है, हम हम वो आइसबर्ग को देख के ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊपर का हिस्सा देख के हमें लगता है जिंदगी इतनी है, जो नीचे का पोर्शन है वो विच इज 10 90%. टाइम्स बिगर,
on which the damn iceberg is floating, we don't take account of that. So whatever we are seeing across is a combined result of the effort is being put up here for all these years, and many good work, many good work. The digitization is one more great example of transparency, and I think in true application, ethical politics, because that brings in transparency, that gives empowerment, that gives knowledge and information across, and things are becoming good. At the same time, how do people use it makes all the difference. You Yes. see, because there you need there you need right mindset people who all will have all those ethical understanding. And so I said it is slice of a society. You cannot have anything different here than what you have in your society. It's a reflection. Do you think you can have one negative example of political decisions which going to be a learning for our young politicians? Learning. I will only say intolerance, and I will explain that intolerance in a way that it can be the consequence of intolerance could be war, which is devastating, teaches nothing good. Ultimately, at the end of the day, by killing people, nobody gets anything. That's not way. Your intolerance could be your promoting other non-important factors in comparison to your real skill sets, your capability. That means in a workspace, if you need a skill set, somebody has got A, there are 10 guys, you start find distinction between them using something else, which could be gender, which could be caste, which could be creed, which could be color, God knows. Because all these four are nowhere related to the skill and not going to make any difference to the result that you're going to get out of that job. So why should they be important? Should not be important at all. And one more thing comes in mind is accountability. Accountability, it's beginning of all problem and solution. That you take ownership of your job, whether you are at home or you are running the country. And if you take that, then you can lead by inspiration, then you can lead by example. Else, there has to be effort from your side to lead by chair, by designation, and that is very short lived. We all deserve the styrofoam cup, ceramic cup is meant only for the chair, so don't look for it. All right, all right, all right. Okay, so I'm again coming back to ethical politics only. अगर आपको संदीप जी को एक एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया बना दिया जाए या उस लेवल में डाल दिया जाए जहां पर संदीप जी इज गोइंग टू चूज एन एमएलए कैंडिडेट इन द इलेक्शन, एमएलए कैंडिडेट, वो एमएलए कैंडिडेट अगर आपको चूज करना हो तो किस प्रकार का एमएलए कैंडिडेट आप चूज करेंगे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और मैं स्टार्ट तो वहीं से करूंगा जहां से मैं अदरवाइज बात करना शुरू किया था। ऐसा लीडर जो जो प्रीच करता है वो प्रैक्टिस करता है, जो प्राइवेट लाइफ में है, जो पब्लिक लाइफ में है, who leads by example, that he does walk the talk, that involves his integrity, honesty, meaning he has to have a purpose, and his larger purpose has to get aligned to the country's purpose, that we are going to see us ourselves 10 years, 20 years ahead. That kind of a vision statement he has to align himself with. He cannot take it somewhere else. So he may have a purpose,
but his larger purpose has to get aligned to what this country wants. That's a start with. And then has to have fundamental values and beliefs, principles, those basics like, honesty, integrity, transparency in public and personal life. The one who should be able to communicate, who should be able to listen to the country, who has a guts to set ethical standards right. It is not a good thing. People pleasing is not going to knock this country ahead. You got to do unpleasant things. One got to be very clear. वो एक स्टोरी था ना, एक राजा, एक ईगल और एक डव। तो ईगल डव को खाने गया, तो डव भागता हुआ राजा के पास चला गया, हमें बचाओ। राजा बोला ठीक है, बचा लेते हैं। ईगल आ गया, बोला हमें तो भूख लगा है, ये तो हमारा खाना है, दुनिया ने यही तय किया है। अच्छा, वो खाना है तो आप एक काम करिए, आप कुछ और खा लीजिए, दूसरा कुछ। बोला दूसरा को भी खाऊंगा, वो भी आपके पास आएगा, हमें बचाओ, फिर क्या करोगे? बोला ये भी सही है, तो एक काम कर लो, मुझे ही खा लो। बोले ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं हुआ, आपको खाऊंगा, आपको तो एक दिन खाऊंगा, 2 दिन खाऊंगा, कितना दिन चलाओगे? आगे क्या खाऊंगा? फिर जब घूम फिर मैं डब में आ जाऊंगा। तो ये जो बड़ा फ्रेमवर्क है ना, देश, यहाँ पे जो लीडर हम देखना चाहते हैं, हम ये बिलीव करते हैं कि उसमें ये फंडामेंटल चीजें होंगे ताकि वो डिसीजन लेगा। अगर उसका कोई फॉर्मूला ही चाहिए तो फिर लीडर क्या काम का? If somebody has to follow formula to get a result, then you don't need leaders. Then you only need follower who will apply formula in life and give some result. So the leader is one who should be able to take decision, and decision in favor of principle, because that goes ahead than rule. Taking decision in favor of rule is easier. Many can take that. Taking decision in favor of principle, keeping larger interest in mind, is all qualifies for a great leader. And that separates a great leader from anybody else in the world. Right, 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 right. Yes. If you get a chance to change the politics, let's say you are the boss of the BJP today, today's BJP ruling the country, what are you going to do to change the politics? I think I will first start with fundamentals. There are two ways of addressing a problem. Because in any case, you have to do it from one of the ends. You cannot start from middle. So, in one end, there is something very fundamental. In any system, any system. Fundamental means, here I say, that's routine, that's format. And at the other end is setting the exceptions, which are the pressure points. Those can be triggered to steer into major direction changes. By that, what I mean is that to make life good for anybody, I promote a formula called fitness. My understanding is, and it's an analogy, so give me 1 minute for this. My understanding is that you need to contribute into routine works which will constitute 80% of your task. That includes that primarily is on fitness, your fitness of your body, fitness of your mind, and fitness of your values and principle. So you start contributing fitness of body. You do exercise every day for a certain period of time, whatever suits you. Fitness of mind, you do meditation, because that tries to put your mind in one place. And you also do your mindfulness activity, like if you are agitated, you may do a little bit of TFT activity or whatever. So that brings you back to the shape then. And then your values and principles I talked about, that you leave them every day. Now pick up this mindful activity. So here you do everyday morning meditation. That the result may not show up on day 1, day 2, day 3, day 4, maybe showing up after 6 months, maybe showing after 1 year, but fundamental changes are happening within. You may not be able to see it. It is like
You do go and do gym in every day, and on the second day you don't see your biceps piling up. You don't see that. You believe that it is going to happen. See it after 3 months, 6 months, whatever. So like that. So you do meditation on with that faith, and then you are disturbed now. So you have mindfulness, you have coping mechanism. I This is also one of the word that I use very frequently. Coping mechanism. We all need that. Coping mechanism could be your playing. I remember in Air Force Technical College we used to play squash. Very good coping mechanism. Every time you hit the ball, you think your 1 milligram of pressure is reducing. If I may measure that way, because you are hitting the ball, so you enjoy that way. So you have to have your coping mechanism for maybe friends are good coping mechanism, whatever. So use that to make this moment easier for you. So I talked about one fundamental thing, which is meditation, which you work. Maybe result will be visible to you after couple of months or so, but every day there is some change happening. You may not see it. And the other one is your instantaneous result, which may not be so profound and fundamental, but it will at least help you to bring the level back to that same place. So the approach in life or the politics also got to be that only. So on one side, you need to start working on fundamentals. What is the fundamentals? Fundamental is your working for younger generation. Younger means youngest generation. Maybe people in the primary schools or secondary schools, the schooling level. So make education so strong that you ultimately produce good human being from that education system, not good champions or professionals. Because in any which way they will learn that. No school teaches attitude. They may teach you skill sets. So the fundamental thing which is important and where it can make life changing difference is your contribution. Work on the principle of bamboo tree. Keep contributing, pouring water with a belief that after 5 years this will start coming up. Now growth is there inside. You cannot see that. So work towards society in terms of education, and the education is not to the child alone. Education to the parents to become a good parent so that they transfer right education. Education to the political fraternity so that they create good governance. Every element of the society needs education. And you have to promote equality there for giving education, otherwise, it will be biased. Your accountability got to be of such a level. Accountability doesn't mean that I do something and it comes on newspaper. No, I'm not talking about that. Accountability is within. So you need to promote that. And at some place, the common people need to rise from their present level of complacency, saying मेरा क्या जाता है, ये तो किसी और का है. That mindset got to also get changed. So fundamental education and nothing else comes in front of me, because it is basically that kind of a education system which you need to revamp to produce a good human being with values and beliefs. Those are stronger and fundamental, will take your country ahead. So this is one part of the story which is like meditation, which may not see result today but will see result 5 years, 10 years hence. So education at all level. And your tactical activity, this is possibly a strategic one. The tactical activity could be your framework. This framework talks about diversity, talks about inclusion, talks about accountability, talks about corruption-free system. So this is a framework which talks about your your investment on time, which will see that you are in the process of making good generation. For this result will be seen in 5 years, 10 years hence. You can't keep waiting for 10 years to see the result. So you got to leave today also. So set your routine and set your exceptional work together. While your routine will take you ahead in life and will give you a result after maybe 5 or 10 years that will make something fundamentally different for you, your exceptions will see that you are on track today and remain on track. That will allow you to manage your transitions little well so that you are on a steady flight. Sandeep, since
आप अभी बात कर रहे हैं और आपने बताया भी, बिल्कुल राइटली बताया कि सोसाइटी के सारे फ्रेगमेंट को, सारे लेवल को एक ऐसा एजुकेशन देना है, बताना है कि वास्तव में आप कौन है और आपका पर्पस क्या है, किस प्रिंसिपल पे आपका पर्पस मिलेगा। सामान्य रूप से ये मैं समझ पाया हूँ आपके पूरे पिछले आधे घंटे में। अभी एक बात बताएं कि अगर एक 22 वर्ष का लड़का आपके पास आता है और कहता है कि मुझे 5 वर्ष में एमएलए का चुनाव जीतना है, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन, what kind of training, what kind of skill, what kind of attitude आप उसको ट्रेन करेंगे? बहुत बढ़िया। आई थिंक काफी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये मेरा एक खासियत ही कह सकते हैं, अदरवाइज कमजोरी भी कहता है कोई कोई लोग, मुझे नहीं मालूम ठीक से। मैं डिफरेंट चीज नहीं कहता हूँ, मैं एक ही चीज कहता हूँ, बिकॉज मुझे जो आता है मैं वही बोलता हूँ। सो मैं फिर वही बात बताऊंगा आपको। I again say that if anybody comes to me, I will tell him to practice fitness. I will tell him that you practice physical fitness. You are physically strong. You should be able to take pressure. These are only three pillars in life. Your second part is your fitness of mind. Please practice meditation. Control your mind, and also have your mindfulness and coping mechanism. Very very important. Coping mechanism works wonderfully well in toxic environment, not so good environment, not so bad environment. माइंड है वो इतना कंट्रोल में नहीं रहता है, वो ऊपर नीचे करते रहता है, आपको उनको वापस लेके आना है। वापस लाने का यही तरीका है। किसी के पास, किसी के लिए दोस्त है कोपिंग मैकेनिज्म, किसी के लिए पेरेंट्स है कोपिंग मैकेनिज्म, किसी के लिए परिवार है कोपिंग मैकेनिज्म, किसी के लिए गेम्स है कोपिंग मैकेनिज्म, किसी के लिए म्यूजिक है, किसी के लिए स्पोर्ट्स है। तो आपको ये ट्रांजिशन मैनेज करना है ताकि आप ट्रैक पे रहें। और तीसरा, ये जो वैल्यू एंड प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसका उसका फिटनेस का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लोग कहता है मेरा ये वैल्यू है, मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं मोटिवेशन है, ये है वो है, चार पांच चीज नाम दे दिए। तो मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि भाई ये सब आपके पास है, आप कहते हैं, तो कुछ दो चार एग्जाम्पल दिखाइए जहां पे आपने इसको लीव किया है, और कुछ दो चार जगह दिखाइए जहां पे आपने इसको लीव नहीं किया, आपको समझ में आया और आपको तकलीफ हुआ, वो तकलीफ क्या हुआ फिर। और आप किसी को इंटरेक्ट करते हैं, वो इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको कैसा लगता है, उसको चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं। तो ये जो वैल्यू की आप बात करते हैं, आप लीव करते हैं क्या? अगर किसी में ये, किसी का ये फिजिकल फिटनेस एंगल, ये फिटनेस ऑफ माइंड एंड फिटनेस ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, ये तीन चीज अगर कोई इन्वेस्ट करता है समय इसके पीछे, तो उसका जब पर्पस अलाइनमेंट होता है उस इंसान का, दैट मीन्स देयर हैज टू बी डायरेक्शन और बेयरिंग। एंड यू मे नॉट नो, बट यू हैव टू नो द ब्रॉडर डायरेक्शन that comes from all these value, belief, strength, principle. They only tell you what you're looking for. लास्ट 5 years में कौन सा चीज आप किया तो आपको बहुत अच्छा लगा। सो ये ये तीनों चीज आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जो आपको एक अकाउंटेबल ग्रेट ह्यूमन बीइंग बनाने में हेल्प करेगा। बिकॉज योर बेस गॉट टू बी फंडामेंटल, यू कैनॉट डू सुपरफिशियल थिंग्स। एक बंदा अगर कोई 3 दिन का मैनेजमेंट कोर्स करता है तो लीडर नहीं बन सकता। कैसे बनेगा, इतना आसान थोड़ी है। तो 3 दिन के बाद वापस आ जाएगा जिंदगी में, वो सब कोई भी चीज अप्लाई नहीं करेगा, ही विल गो बैक टू द प्लेस वेयर ही स्टार्टेड फ्रॉम। So it is all, it's all about fundamental. There is no quick fix here. There is no shortcut and quick fix here. Please invest, and invest on something which is fundamental. So in my understanding, fundamental is your body, fundamental is your mind, and fundamental is your values and principle. Practice all these fitnesses over a period of time. You will definitely come out as a strong personality who can make difference in the system, because he will leave those values. And as he leaves those values, every behavior of him or her will reflect those values. How do you promote that? You have to walk the talk. आपको तो वो करना है, तब जाकर लोग बोलेगा हाँ ये अच्छा है, लोग फॉलो करते हैं। If you are disciplined, then you can preach and practice about discipline. You yourself is indisciplined, even if you talk about discipline, who's going to listen to you? So practice what you preach.
that takes you one step ahead in life. So if anybody comes to me, and I keep telling this to all my boys who keeps coming on my way, or the senior professionals even, that invest in these three of body, mind, and values and principle. There is no shortcut here. And I will give you some quick fix temporarily that can be adapted in life. But keep it simple, work on basics. That's the only mantra. दैट्स द ओनली मंत्रा। ऑलराइट, ऑलराइट। सो हेल्थ के साथ-साथ आपको मस्तिष्क पे काम करना है और अपने प्रिंसिपल्स पे, अपने वैल्यूज़ पे ध्यान देना है। ये 3 चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बेसिक बनाती हैं। और एनीवे, सो Sandeep, do you find any political decision of Indian government, of any state government in India, which makes you proud about that decision, political decision? You see, one decision, rather two of them, I have, I mean, that those resonated with me very well. There are many, there must be many. Some unknown to me, couple of them might not be coming in my mind now. The first one is the decision of seeing the nuclear principle in its perspective. India's decision of taking that nuclear philosophy, reframing the nuclear philosophy way back when we first exploded the bomb. ओके, ओके, हाँ, ठीक है। इंदिरा जी के समय में एंड देन फिर अटल जी के समय में। Yes, because uh, that has put you in perspective or in league, and there can be many good use also. It need not to be weaponizing the country, no. And then some of the weaponizing could be in the form of deterrent. You need to also at times speak in a language which people understand. There is a famous game of communication, no? There is a chain. One man shows something, the next man, the next man, next man, and finally the last man shows something which is entirely different. You cannot afford to have that in running a country. You need to speak in a language which others understand, and that's very important. It may not, need not to be arrogance, but it is to be powerful, and that is one. And second one is this understanding all about and adapting into this very recent policy of uh, there are this is getting promoted also all around, I see. But if anybody would have possibly done it, I do not know about. I'm not saying about this present incumbent, but I said about the foreign policy of the country. It's very important to put a right perspective. And how do you know you are doing good? There has to be a measure. There can be a measure where somebody does poll, somebody does something else. But in in the world of politics, amongst many leaders, how people are seeing you and acknowledging you in public forum is one recognition of something must be going right in some direction. Is one recognition of something must be going right in one direction. Otherwise, everybody is not a fool. So you decide to speak in a language, or you decide to put your policy ahead, and you do that in such a way that even if that is not in conformity with many other so-called big powers, still they acknowledge you, accept you, and not create much of tantrum in public. Big thing, not happened so easily. Again, I say that it must be the result of many years of effort, not maybe 5, 10 years, maybe more than that. I relate to the example of iceberg. Not so easy. Nothing can happen overnight. Not not your image building exercise. It is like your image consultancy. So a country like India with such a strength and
population and intelligence and presence now, has to also do something little cosmetic. Image consultancy is important. You need to do that. Perception makes a lot of difference. You may like it, you may not like it. So what? As long as it is not damaging, it is not untrue, it is not something yourself related to your subject, unethical, it is acceptable. It is acceptable. कुछ लोगों से बात करने पे तो चर्चा में ये विषय आया कि अब आने वाले समय में आने वाले पॉलिटिक्स में ट्रेन्ड पॉलिटिशियंस की डिमांड बढ़ने वाली है। ऐसे पॉलिटिशियंस जो ट्रेन्ड हो, स्किल उन्होंने सीखा हो, उनके पास नॉलेज हो। जैसे डॉक्टर को नॉलेज हो करके डॉक्टर बनता है, वो 10 वर्ष लग जाते हैं उसको डॉक्टर बनने में। एक एडवोकेट के पास भी वैसा ही है, वो एडवोकेसी करता है, फिर उसके बाद इंटर्नशिप करता है बड़े लॉयर के बीच और फिर वो बनता है। इस तरीके से हर फील्ड में है, पॉलिटिक्स में नहीं है। ऐसा कहना है लोगों का कि पॉलिटिक्स में अब ट्रेनिंग की जरूरत है, एक राइट ट्रेनिंग की जरूरत है। राइट ट्रेनिंग के थ्रू अगर वो पॉलिटिशियन बनने का प्रयास करेगा तो लोग उसको पसंद करेंगे। क्या आप सहमत हैं इस बात से? 100% सहमत है। मुझे ये स्ट्रांगली लगता है कि अगर पेड़ आप आम का डालेंगे तो फल भी आम ही आने वाला है, अमरूद नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जिन लोगों को सामने लेके आएंगे वो वही फिलोसॉफी को आगे बढ़ाएंगे। तो वहां पे सिर्फ इसमें सिर्फ मुझे एक ही चीज पे जोर देना है। जब मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं स्कूल कॉलेज वाली एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए आपने ट्रेनिंग बोला तो मुझे अच्छा लगा। ये वो थोड़ा सा एक लेवल नीचे जाके काम करता है। कुछ लोगों के पास वो एक्सेस नहीं था शुरुआत में ताकि वो जाके बहुत ज्यादा फॉर्मल स्टडी करे, पर वो उनके अंदर में बहुत सारे लीडरशिप इंस्टिंक्ट है जो देश के लिए अच्छा है। तो आपके पास एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है जो आपका पॉलिटिकल लीडरशिप को छांट के आगे बढ़ाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वहां पे गेटिंग क्राइटेरिया। साहब बहुत सारे एग्जाम है जहां पे लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट में एग्जाम देते हैं, और वहां एक इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज होता है जिसमें 40% मिलने से ही आपका बाकी नंबर को काउंट किया जाता है। तो सर ये राजनीति में ना गेटिंग क्राइटेरिया बहुत जरूरी है, और वो गेटिंग क्राइटेरिया हैज टू बी समथिंग टू डू विथ ethics only and nothing else. People passed through this ethical system can only become leaders. The rest can be at best a follower. So gating has to be there. Else you will have this push pull. One person will say this is great, and the other person will say this is absolutely bad. How a poor Indian think which one is right? One of them is ethical, one of them is not ethical, possibly. Otherwise, both of them are not ethical. How can one subject be different? कोई बार्गेनिंग करता है ना, I do not know how to manage time. Damn it, where is time? Time is only 24 hours. You have no control over it. Everybody is having 24 hours. So where is the question of you managing time? You manage yourself. You cannot manage time. Similarly, if something is happening, that happening has to be either good or bad. Two or three or four people cannot say it is little good, little bad, too good, some bad. No. So there has to be a getting criteria, which is ethics. And one point of time, it was there in India, where there were cases that the country was represented by even some orators from the opposition in the international forum. And when asked, they said the country is more important than political party. So both were great. The team ruling and team in opposition, they had so much of clear and ethical understanding that when it comes to country and outside, we talk in one voice. We talk in one voice. ऑल राइट। सो मुझे And in this context, before you, sorry, I just wanted to say one more श्योर thing, श्योर and प्लीज that is very important to me. प्लीज। That this education and knowledge, ethical understanding should be such
that people make no mistake in understanding what is the meaning of democracy, the true meaning. It is not speak as you like, go as you like. It cannot be. वेरी गुड सो आई कैन मैं अभी 4 शब्द यहाँ पर बोलना चाहूंगा जो आपसे मैंने समझने का प्रयास किया आपसे ये सभी के लिए है कि 4 शब्द कौन-कौन से होते हैं स्टार्ट विद पर्पस आप अपने जीवन की शुरुआत अपने पॉलिटिक्स की शुरुआत भी पर्पस से करें पर्पस क्या है राइट पर्पस होना चाहिए राइट पर्पस अगर क्लियर है तो राइट प्रिंसिपल आपको सेट करना पड़ेगा पी से पर्पस पी से प्रिंसिपल जब राइट प्रिंसिपल राइट वैल्यूज आपके क्रिएट हो गए तो राइट प्रैक्टिसेस में आपको जाना पड़ेगा उन पर्पस उस वैल्यू का प्रैक्टिस सही तरीके से कैसे होता है अगर ये राइट पर्पस राइट प्रिंसिपल राइट प्रैक्टिसेस हो गए तो आपका राइट पॉलिटिक्स हो जाएगा 4 पी आपके सामने है हम आपको लगातार एथिकल पॉलिटिक्स के माध्यम से एथिकल पॉलिटिकल सिस्टम के माध्यम से कम खर्च में अपने बल पर चुनाव जीतने के लिए क्या आवश्यक है यह बता रहे हैं यह समझा रहे हैं संदीप जी जैसे लोग आपके सामने आ रहे हैं लगातार अगले एपिसोड में किसी विशेष मेहमान के साथ फिर हम मिलेंगे तब तक आप राइट पॉलिटिक्स के बारे में समझते रहिए और ढूंढते रहिए आपके लिए कैसे काम करने वाली है और आप राइट पॉलिटिक्स को कैसे जीने वाले हैं तब तक नमस्कार